everyone, today we will do study about the cancer. Cancer क्या है? What are the cause of cancer? क्या कारण है इसके? How many types of tumor and how can we diagnose and what are the treatment of cancer? So firstly we will see about the what is cancer. Cancer is the uncontrolled growth of abnormal cell. Normally सेल्स जो है कंट्रोल्ड वे में डिवाइड करते हैं, पर जब सेल अपना कंट्रोल खो दे और आउट ऑफ कंट्रोल जाकर के उसमें डिवीजन होता रहे, कंटिन्यूअसली डिवीजन होता रहे, तो व्हाट हैपेंस इन द बॉडी? वी विल सफर फ्रॉम कैंसर. हम तब कहलाएंगे कि हमें कैंसर, वी आर सफरिंग बिकॉज समवेयर इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी कंटिन्यूअसली ग्रोथ हैपेंस, और उसका हमारी बॉडी के डेवलपमेंट से कोई लेना, उस कैंसर सेल का खुद को कैसे ग्रो कराना है, दूसरे सेल्स को किस तरह से अपने कैप्चर में लेना है, कितना अपने आप को स्प्रेड कर सके. कैंसर सेल का मोटो यही होता है कि वो दूसरे सेल्स को भी अफेक्ट करे. बट नॉट ऑल टाइप ऑफ कैंसर, सम आर रेस्ट्रिक्टेड इन लिमिटेड एरिया बट सम आर continuously grow, spread all over the body. So we will see about this in later section. Today we will take little knowledge about the cancer. Cancer is the most dreaded disease. Major cause of death all over the world is due to the cancer. Can occur at any age. Cancer can occur at any age. ये उम्र के किसी भी पड़ाव में हो सकता है. कैंसर कभी भी हो सकता है, छोटे बच्चे में हो, बूढ़े में हो, यंग में हो, एनी स्टेज, नॉट लिमिटेड टू एनी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द लाइफ. About but have seen about 67% of cancer death occur in the people who are older than 65 years. In 2022 इंडिया में होने वाली जो डेथ थी कैंसर से, वो कितनी थी? Surprised to know that 9.1 lakh people died due to cancer. And 2022 में नए केसेस कैंसर के 14.1 lakh आए according to WHO. So we have to think about the what are the reason of the cancer. We will see in the next section about the reason of cancer. Now we will discuss about the causes of cancer. What are the causes of cancer? किस वजह से कैंसर होता है, इसके कौन कौन से एजेंट्स हैं और वो एजेंट्स क्या कहलाते हैं. कैंसर के लिए जो एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल है वो कार्सिनोजेंस कहलाएंगे, जिसकी वजह से कैंसर होता है. तो 3 मेजर कार्सिनोजेंस: फिजिकल कार्सिनोजेंस, केमिकल कार्सिनोजेंस एंड बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस. Come to the physical carcinogen. These carcinogens are some are sources of energy, some are synthetically made, some are particulate matter as the tiny particles present in the air. Radiation, pollutants, fibers, metals, crystals. Radiations, 2 types of radiation, ionizing and non-ionizing radiation. Under the ionizing radiation, X-rays and gamma rays responsible for 1% of cancer. Non-ionizing radiation, UV rays, about 10% of cancer caused by the UV rays. For the radiation, natural and man-made sources are X-ray comes from and gamma rays comes from the some cosmic rays, from the radioactive elements present in the earth as natural sources. In the natural sources, UV rays, every day we come in, without sunlight we can't live, but in long exposure to the sunlight, on that time UV rays will be responsible for about 10% of cancer. If we see in man-made radiation,
different types of radiation used to diagnose the cancer may be changed into this diagnosis by the radiation may be changed into the different type of cancer. Nuclear power plant responsible for the sometimes responsible for the radiation which damage the DNA of the cell and change into cancerous cell. Next one is pollutants and fibers as tiny particles, metals, crystals, cobalt, nickel, silica. These matters if enter in our body by any ways, by inhalation, by ingestion and reach to the different part of the body, that part must will be in the long term, in the short term, not immediately its symptoms will be clear, but in the long term it damages the DNA and will change the normal cell into cancerous cell. अगर किसी भी तरह से एनी वेज बाय ब्रीदिंग, सांस लेकर के या हमारे फूड आइटम्स के थ्रू, एनी वेज अगर हम उसको ले रहे हैं और इंजेक्शन खाने से, सांस लेने से अगर ये एलिमेंट्स हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं, ऑन दैट टाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर. वन एग्जाम्पल फॉर दैट इज सार्कोमा. Sarcoma is the soft tissue tumor developed in the organ. Silica responsible for the lung cancer. So, these physical elements as carcinogens responsible for cancer. Come to the chemical carcinogen. Various chemicals. Chemicals comes from tobacco in the form of nicotine, alcohol, insecticides, pesticides, fertilizers, cosmetic, preservative, artificial sweetener and food dyes. In present day, we are consuming and most of the chemical carcinogens, this type of, we use every day our life, every day. Insecticides, pesticides used in food, we are taking. Fertilizers mostly used, हम अपने खाने में इन फर्टिलाइजर्स जिनकी वजह से फूड क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं और उनका अगर बहुत ज्यादा यूज होता है तो दिस फर्टिलाइजर्स मोस्ट विल बी एंटर इन आवर बॉडी एज आवर डाइट. Cosmetics, we are using too much cosmetics in these days to look beautiful, so will enter in our, will be responsible for the cancer. Damage these cosmetics because made up of chemicals. Tobacco contain nicotine, alcohol already responsible for the insecticides, fertilizers made up of different chemicals, preservatives, artificial sweetener and food dyes, coloring agents. Damage, finally damage when enter in our diet, then body absorb these elements and goes into the each and every cell. The DNA of the cell will be damaged and will change in short term, कम समय में या ज्यादा समय में, कोई भी, not fixed in and not each and every person, but life के किसी भी stage में may be change that normal cell into the cancerous cell. If we take this type of carcinogens in our daily life, we use. Now come to the biological carcinogens. Some microorganisms like viruses, bacteria. Viruses contain oncogenes which alter the our normal cell growth, change into the, transform into the cancerous cell. Some infections due to the microorganism will lead in the long term. कोई भी प्रोटोजोन्स हो या किसी का भी इन्फेक्शन अगर हमारी बॉडी में होता है, कोई ऑर्गन अफेक्टेड होता है, लॉन्ग टर्म में अगर हम उसके प्रॉपर हम उसका क्योर नहीं कर रहे होते हैं, देन दैट विल चेंज इनटू द, वो इन्फेक्शन चेंज हो सकता है कैंसर में. फॉर एग्जाम्पल सम वायरसेस ह्यूमन
papilloma virus, hepatitis B virus, hepatitis C viruses. These are the viruses responsible for the cancer. In the human normal cell, proto-oncogen present. This proto-oncogen responsible for the controlled cell division, each and every cells of different organs fixed. उनका फिक्स है कि उनको कब डिवाइड करना है, कितना डिवाइड करना है, उनके सेल की ग्रोथ कितनी होगी, और वो सब कंट्रोल होता है प्रोटोऑन्कोजेन से. If this proto-oncogen activated and changed into the oncogen, if proto-oncogen which present in our cell controlling, regulating the normal cell growth change into the oncogen, our cell, body cell of that particular organ change into the cancerous cell and responsible for the cancer. So this is about the causes of cancer.